Hello and welcome to the weekly Kashmir University Video Digest Quest. First, a look at the highlights. Department of Social Work celebrates Women's Day. Iqbal Institute of Culture and Philosophy organizes seminar entitled Contemporary World Order and Iqbal, and some important notifications of the university. Now the details of these events with your host Umar Malik. On the International Women's Day, the Department of Social Work, University of Kashmir, organized a program in collaboration with State Resource Center for Women J&K at Ibn Khaldun Auditorium, Allama Iqbal Library, University of Kashmir. The theme for the program to mark this year's International Women's Day was Think Equal, Build Smart, Innovate for Change. Registrar University of Kashmir Dr. Nisar Ahmed Mir spoke about the rights of women and highlighted significance of International Women's Day. He assured the support of university administration in every endeavor that will promote women empowerment. When religious scriptures came on the earth, when we start from Bible, Torah, Zabur and Quran, and in every scripture you see that woman has given the highest status, highest place. For example, when we see that जन्नत है तो वो माँ के कदमों के नीचे है. अगर किसी मर्द को जन्नत में जाना है तो इसके पास बेटियां होना ज़रूरी है. Then if you move to the historical perspectives of women, we see that whether we go for when Karl Marx says that evolution of society, it goes from the pastoral age to the feudal, then it goes to the industrial. I hope you have gone through those stages, you have learned about those stages. And when we see that the woman has always been the part of historical revolutions in the society. Though at times she has been given some job, if you say the hunting age of the society, you see that woman, because of certain reasons, male were going to the hunting and woman was placed to take care of her household activities. So historically, when we see that all the societies have grown only when there is coordination, when there is cooperation between the male and female. Woman empowerment, or the Women International Day, how we celebrate, or what we call the Woman, it not normally should start from the childhood of a baby, of a girl child. When we see it is, when we go what madam was calling that preference to a male child, then we go to the education of the female child, then we go to the nutrition of the male and female child even, and we see that it starts empowerment should start from the birth of a child. So these are few things which we need to see in the life. Dean School of Social Science Professor Asifa Jan expressed her views on the Women's Day. As it's a matter of great pleasure that I have been given opportunity to speak on the occasion of the International Women's Day. This day is a grim reminder of the innumerable sacrifices made by the women folk who constitute half of the population, humanity rather. And because of structural exploitation, this class of benevolent life givers has been dehumanized and reduced as second class, deplorable subject. Although the condition of women in most of the advanced countries has relatively ameliorated by way of extending civil liberties to them, which remains to be done. But much remains to be done to address the stable unitences of the discrimination. In our part of this globe, women constitute to be the worst sufferers of domestic violence. They are subjected to teasing, sexual abuse, harassment, and discrimination
in the public sphere and in the private arena. Notwithstanding the exposure of the women's role in public life, made possible by widespread educational opportunities, much needs to be done to do away with patriarchal value system that run like a toxin in the bloodstream of our society. Media Coordinator, University of Kashmir Muslim Jan, emphasized on the need of women to be strong and develop the leadership qualities. She also spoke about the contribution of women in the development of the society. I think we need to understand our stamina, understand our power, understand our capabilities. That is, we need not to demean ourselves. I think we are ourselves responsible for certain kind of things that we demean at times to ourselves. Second thing is that when we talk of atrocities, when we talk of violence, I think we need to deconstruct certain narratives in the society. When we talk of violence, violence is everywhere. Violence is now that men are against men and they are creating so much of violence in the society. So same is that women can also be used, in fact, for that violence. She becomes an instrument for the violence and she is not herself a violence. While as we say the men are the protectors, I think that myth is, again, we have to deconstruct that, because men are not now the protectors. Women is herself has to protect herself. औरत जब तक अपनी इज्जत खुद नहीं करेगी, the most important thing present is we are going through the crisis of dignity, we are going through the crisis of respect, because the point is that एक चीज़ बहुत बड़ी बात होती है कि आपको जब घर में रिकग्निशन नहीं मिलती है, सबसे बड़ी बात क्राइसिस आपको होती है जब आप अपने घर में, जब आप अपने पेरेंट्स के पास होते हैं. वी हैव स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट द वायलेंस व्हेन वी गो इनटू द इन-लॉज एंड वी आर रेजिंग क्वेश्चंस कि मेरी मदर इन लॉ ने ऐसे किया, मेरे ब्रदर इन लॉ ने ऐसे किया, मेरे हस्बैंड ने ऐसे किया. वी आर नेवर, मतलब इतनी हिम्मत हमें नहीं होती है कि जब हम अपने घर में होते हैं, हमारे भाई से कितनी ज़्यादती हमारे साथ होती है, हमारे बाप से कितनी ज़्यादती होती है, वो आप शायद अंडर कार्पेट रखते हैं क्योंकि आपको ये नहीं लगता कि बाप भी आपसे ज़्यादती करता है. सो दीज आर द थिंग्स वी नीड टू डीकंस्ट्रक्ट सर्टन काइंड ऑफ थिंग्स विच वी हैव, आई थिंक. और सबसे बड़ी बात जो है, मुझे लगता है मैं खुद एक सोसाइटी हूँ. I think we need to build our society. Dr. Adil Bashir, Coordinator, Department of Social Work, and gender expert Samina Mir also spoke on the occasion. With the intention of assessing what is the situation of women vis-a-vis the policies, vis-a-vis the programs, vis-a-vis the legislations, and overall the status of women nationally and globally. This has been always the objective of celebrating these days, and I always believe that women rights, women issues, status of women should not always be a concern, or you look into these aspects only on the 8th March, but throughout the year we should respect the rights, we should give due equality and avoid discrimination. Today, this International Women's Day, we are here to commemorate because we know you are the future generation, and we would like you to safeguard the rights, uphold the dignity and respect women. I'm glad that we have youngsters here, we have girls, we have boys. We would like to balance it. I would have loved that if there would have been more men here, more youngsters in terms of boys, because our understanding is that women are already at it. They know how they have to come out and exercise their agencies. But at the same time, men also need to be sensitized that women are equal partners in the society. They work for the economic upliftment, for the social, cultural, and all the religious factors which we have in our society. Assistant Professor at the Department of Social Work, Dr. Javed Rashid, conducted the proceedings of the event.
The Iqbal Institute of Culture and Philosophy, University of Kashmir, organized a two-day national seminar entitled Contemporary World Order and Iqbal. Coordinator, Iqbal Institute of Culture and Philosophy, Dr. Mushtaq Ahmed Ganai, in his keynote address said that he sincerely believes in the philosophy of Iqbal as it guides every man in almost every aspect of his life. बखूबी इस अमर से वाकिफ़ हैं कि अल्लामा इकबाल अज़ीम फ़लसफ़ी और एक राशिकुल अक़ीदा मुफ़क्किर मिल्लत हैं। बहैसियत मुफ़क्किर मिल्लत आप इस अमर के शिद्दत से कायल रहे हैं कि माशरे को हर दम ताज़ा अफ़कार व ख़यालात से मुतहरिक रखा जाए। वो खुद कहते हैं कि जहान ताज़ा की अफ़कार ताज़ा से है नमूद, जहान ताज़ा की अफ़कार ताज़ा से है नमूद कि संग व खिश से होते नहीं जहाँ पैदा। अपने तबहुरी इल्म फ़ज़ल से अल्लामा इकबाल ने इस्लाम के फ़िक्री इर्तिका को जमूद से नजात दिलाने के लिए शऊरी कोशिशें की और मिल्लत मुस्लिमा के माशरती निज़ाम को अहद जदीद के तकाज़ों से नबरुद आज़मा होने और तज़ादात से बचाने की अमली ज़िम्मेदारी उन्होंने निभाई। बरसगीर की तहज़ीबी तारीख़ पर एक तायराना निगाह दौड़ाने से यही हकीकत मुतरशा होती है कि शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के बाद अल्लामा इकबाल ने ही तारीख़ी और तहज़ीबी ज़वाल के दौर इन्हितात में एक बेहतरीन नवाज़ मिल्लत का किरदार अंजाम दिया। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हुज़रात, हकीकत तो यह है कि आज 21वीं सदी में भी इंसानियत पहले से कहीं ज़्यादा पुरपेच मसाइल में गिरी हुई है। इस एतबार से फ़िक्रियात इकबाल की अहमियत मशरिक़ व मग़रिब के लिए यकसान और अहम है। अमन आलम के इस अजीम अलमबरदार ने अपनी चंद रोज़ा ज़िंदगी में इंसानियत के लिए लामहदूद वसअतों को मुसख्खर किया। लिहाजा यही वो सुरागी ज़िंदगी है जिसको पाकर हम अपने बहुत सारे मसाइल से नजात हासिल कर सकते हैं। इसीलिए गुज़श्ता 4 दहाइयों से इकबाल इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चर एंड फ़िलासफ़ी अदबी, इल्मी और तहकीकी अंदाज़ फ़िक्र नज़र से यहाँ इकबाल का नूर बसीरत आम करने में मुनहमिक है। Vice Chancellor, Kashmir University, Professor Talat Ahmed, in his inaugural lecture said that Iqbal is relevant for all times and he is the poet-philosopher of future. He further said that such seminars are fruitful and bring out the best in scholars and directed to organize more seminars of this kind. इकबाल इंस्टीट्यूट जो है मैं समझता हूँ कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट इदारा है यूनिवर्सिटी के लिए और ख़ास करके जो कंट्रीब्यूशंस इकबाल साहब की रही हैं और उसको वो लोगों के बीच में लाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में पढ़ाया जाए, उनको सिखाया जाए और ख़ास करके अभी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में जहाँ पे इकबाल की सारी फ़िलासफ़ी जो है वो इंसानियत के ऊपर थी, तो उसका इम्पोर्टेंस जो है वो किस तरह से उन लोगों को समझाया जाए जो पावर में है और उनको ये एहसास होना चाहिए कि इंसानियत की जो है वो क्या इम्पोर्टेंस है। Professor Muhammad Aslam Islahi, a reputed Islamic scholar and faculty member at the Department of Arabic, Jawaharlal Nehru University, Delhi, was guest of honor on the occasion. अल्लामा कहते हैं कि गुरेज अस्तर्द है जमहूरी, गुरेज अस्तर जमहूरी, गुरेज अस्तर जमहूरी, गुलाम पुख्ता कारशो कि आज मग़ज़े दुसद खर फ़िक्र इंसानी नहीं आए। मैं समझता हूँ कि जो उर्दू में हज़रात हैं वो नहीं समझ सके होंगे, वो तो नहीं समझ सके होंगे। तर्जमा कर दें इसका। ये जो आखिर में इनका शेर है कि आज मग़ज़े दुसद खर फ़िक्र इंसानी नमी आए। मैं यहाँ थोड़ा सा बड़े एहतराम के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि इस्लाम की जो सबसे बड़ी खूबी है और अल्लामा ने भी ताकीद किया है, अल्लाह ने भी कहा है कि भाई हम पहले नंबर पर तो इंसानियत को रखते हैं, दूसरे नंबर पर मसावत को रखते हैं, तीसरे नंबर पर हुर्रियत को रखते हैं। 3 चीज़ें उन्होंने बनाई। मसावत मतलब मसावत सब बराबर हैं। हमारा एक दहकान जो है जो खेत में काम करता है वो भी बहुत कीमती है हमारी तरह से जो हम प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी में, वो भी कोई ना कोई काम कर रहा है अल्लाह की हिकमत और मर्ज़ी का। सब काबिल एहतराम है, कोई खर नहीं। Former Head Department of Iqbal Institute of Culture and Philosophy, Dr. Bashir Ahmed Nahvi, also expressed his views. अहद जदीद अपनी तमाम तर मादी और साइंसी तरक्की के साथ आगे की जानिब गामज़न है। इंसानी फ़िक्र और साइंसी उलूम में वसअत
फैलाव, कशिश और क़ुव्वत में तेज़ी के साथ इजाफ़ा होता जा रहा है और इंसान सूरज की शुआओं और फ़ज़ाई बसीत की गुज़रगाहों से आगे नई मंजिलों और नए रास्तों की तलाश में सरगर्म अमल है। मरीख़ मुश्तरी पर बस्तियाँ आबाद करने और खला की पहनाइयों में ख़याबान गुलिस्तां सजाने के मंसूबे इंसान के जहन में मुतशक्किल हो रहे हैं और ऐसा महसूस हो रहा है कि आने वाले साल इंसानी तख्लीक़ात के एतबार से हैरान कुन भी होंगे और इत्मीनान बख्श भी। लेकिन इस हमगीर तरक्की और ज़बरदस्त पेशरफ के बावजूद इंसान को हर ज़माने में रूहानी अक़दार और अखलाकी तरबियत की ज़रूरत रही पड़ी है। ये तरबियत साइंस की तजर्बागाहों और उलूम जदीदा की दानिशगाहों में आज मफकूद भी है और आइंदा भी इसके मौजूद होने के बहुत कम इम्कानात नज़र आते हैं। जदीद तलीमी मराकज़ इंसान को असरी उलूम की बारीकियों और दानिश्वरी की नज़ाकतों से बहरवर तो करते हैं, लेकिन साथ ही साथ उसे इंसानियत के अरफा मकाम से गिराकर हैवानों की सफ़ में और सिफली जज्बात की राव में बहा कर ले जाते हैं। Coordinator Iqbal Institute of Culture and Philosophy Dr. Mushtaq Ahmed Ganai presented the concluding remarks. Now some important notifications. It's to inform all in general that the university campus is a no-smoking zone. All the employees, students and visitors are advised to adhere to the ban on smoking on the campus. Further, if anyone is found smoking, strict action shall be taken. Online application forms are invited from the eligible candidates for admission to 2 years post-basic nursing course at Bibi Halima College of Nursing and Medical Technology, Karanagar, Srinagar for the academic session 2019. Online application forms shall be available from March 15, 2019 to March 25th. For submission of online application forms, the candidates are advised to visit Kashmir University official website kashmiruniversity.net or kashmiruniversity.ac.in. Online applications are invited from eligible candidates of Jammu and Kashmir, including Ladakh, for admission to BBA, BCA, BSc, IT, BA Honours Mass Communication, Multimedia Production and BCom General programs in the private colleges affiliated with the University of Kashmir for the session 2019-2020. The eligible candidates can apply for more than one program. Online application forms shall be available from March 11, 2019 to March 22, 2019. For submission of online application forms, the candidates are advised to visit Kashmir University official website kashmiruniversity.net or kashmiruniversity.ac.in. That's all for today's episode. Log on to our website emmrckashmir.com where you can check the latest episode of The Quest. You can also watch it on our YouTube channel, that is KU Television. Do send us your valuable suggestions at our email address, that is quest@emmrckashmir.com. Before I take your leave, here are a few words of wisdom. If you tell the truth, you do not have to remember anything.